So GST panels propose a slew of tax tweaks. So pending GST रिफॉर्म्स में जब हम बात कर रहे हैं तो एक ये एस्पेक्ट था कि जो GST स्लैब्स हैं वो और कम होने चाहिए, उसको और रैशनलाइज किया जाना चाहिए. बट उसके अगेंस्ट एक आर्गुमेंट ये आया है कि वी गो अहेड विद रिड्यूसिंग द GST स्लैब्स तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी कि जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है दैट कैन डिक्लाइन. सो दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. देन यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कितना GST रेट इम्पोज किया जाना चाहिए. दिस वाज अगेन काफी टाइम दिस वाज देयर इन न्यूज. सो करेंटली 18% GST इम्पोज किया जाता है ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर द टर्म पॉलिसीज या फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज. एंड members have suggested reducing this from 18% to 5% on the health, because again this is a basic necessity, a part of your fundamental right to health. It is a part of your Article 21 of the Constitution, dignified life. So this is one proposal coming from here. Then it also discussed the GST rates on 20-liter packaged drinking water bottles, या bicycles हो या exercise notebooks हो to 5%. तो जो basic items of necessity है, सर्वाइवल है, फंडामेंटल है टू ह्यूमन लिविंग, उसके ऊपर मिनिमम टैक्स होना चाहिए. तो उसको ही प्रपोज किया गया. बेन GST रेट रिस्ट वॉचेस अबव ₹20,000, शूज अबव 15,000, उस पर 28% GST इम्पोज होना चाहिए. सो एक तरीके से ये जो ट्वीक्स हो रही हैं, थ्रू दिस वी कैन ऑल्सो से दैट समवेयर वी कैन मेक दिस फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन मोर प्रोग्रेसिव, क्योंकि अभी वी से कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर. बट जो ट्वीक्स हो रही है कि लग्जरी आइटम्स के ऊपर ज्यादा GST रेट होना चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज है उस पर मिनिमम 5% होना चाहिए. तो थ्रू दिस वी कैन इंश्योर कि इवन GST को हम प्रोग्रेसिव कैसे बना सकते हैं. तो GST काउंसिल की तरफ से रिकमेंडेशन आई. So food grain production target set at 341 55 million tons in 2024-25. So if we track this the previous years, so 2019-20 में it was at only 297 metric tons. So with increased population, with more, again, we say that climate change vagaries and vulnerabilities, which is impacting the supply. The standing crop is getting destroyed because of distorted rainfall pattern, yeah, hailstorms, yeah, increased wind speed. So we can say कि even the need for buffer stock maintenance, and at the same time, if we are able to produce more, given that we are able to firstly satisfy our domestic demands, then we can also somewhere play important role in exporting the surplus. So National Conference on Agriculture for Rabi campaign 2024 was organized. So high yield varieties, intercropping, crop diversification, increased area and better agricultural practices. So this is the target. This is again just we should have an idea. So even fertilizers ke liye, like fertilizer subsidies are also being rationalized. So diammonium, phosphate, phosphate, even role of agricultural startups, agriculture tech startups, they are playing important role in terms of making the agriculture more scientific. And then we talk about precision based agriculture when it comes to even the irrigation practices that we follow. So चाहे like per drop more crop हो तो और precision, we are going into the micro aspect. So reducing the dependency on the chemicals and the fertilizers. So natural farming या even organic farming को हम promote कर रहे हैं. Then horticultural crops. Then easy access to the markets, that is another aspect. तो pulses production भी हम domestically और increase करने की बात कर रहे हैं so that we can reduce our import dependence. So meetings between the agricultural ministers of different states, even that is being organized. So Telegram in trouble. Recent insurance-based data breach हुआ through Telegram chatbots made much news. We saw this thing. So Star Health breach जो हुआ था on October 9. So Star Health Insurance was hit by a cyber attack.
which it said caused unauthorized and illegal access to certain data. तो टेलीग्राम के रेगुलेशन की हमने पहले बात करी थी, तो इवन जो कोविन रिलेटेड डेटा है उसके लीक की भी बात होती है कोविन ऐप से। तो ये भी इट वाज लीक्ड ऑनलाइन वाया टेलीग्राम बॉट। तो ऐसे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं। सो क्या स्टेप्स लिए गए टू रेगुलेट दिस, एक वो एस्पेक्ट होता है, बिकॉज दिस इज अ रिपीट सिमिलर फॉर्म का अटैक पहले हो चुका है। तो मोर रिसेंटली जब हम एनटीए की बात करते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर दैट वाज आल्सो लीक्ड ऑन द सेम टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे ही 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। बट व्हाई इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन ऑन टेलीग्राम इज द क्वेश्चन। So many cybersecurity breaches, easy ways you can connect with the people globally, but again, threat भी साथ में ही आता है। Anonymity it provides to its users, so that is why we can say this becomes much more easier option, जिसकी वजह से साइबर अटैक हो रहा है, डेटा ब्रीच हो रहा है। तो केवाईसी करना, एंड अगेन even Telegram needs to allow the regulatory authorities to have access to their platform या जितना required है when it comes to again timely disclosures. Like other problems की यहाँ बात हो रही है, जैसे Securities and Exchange Board of India hit a Telegram operator with 50 lakh fine for manipulating the stock market and prices. तो even जो financial influencers का rise है, they are creating channels on Telegram. The slice of countryside, rural tourism is getting popular across the world. UN also pushes for more village tourism because ये sustainable है. Plus, it will generate more livelihood opportunities in the rural areas. Rural areas can become more self-sufficient, self-sustaining, so which can also help in reducing the pressure which is generated because of migration. तो नॉन फार्म सेक्टर में और जॉब्स क्रिएट हो सकती है, लाइक पीपल आर मेकिंग यूट्यूब चैनल्स सोशल मीडिया पे सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट कि कौन सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं। तो एक उस तरीके से टूरिस्ट और टूरिज्म प्रमोट हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ बात हो रही है जैसे बिश्नोई विलेज राजस्थान में, इट इज होम टू द एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पीपल्स ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड देयर कल्चर एट द सेम टाइम। तो उनको हार्म ना हो एट द सेम टाइम, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको कैसे प्रमोट करेंगे रूरल टूरिज्म को। तो एसडीजी गोल से भी इट इज रिलेटेड। UN World Tourism Organization came up with the best tourism villages by UN Tourism Initiative. So चाहे landscapes हो, cultural diversity हो, knowledge systems हो, तो they help in boosting rural tourism. For example, Dhordo, it is a small village located in the Kutch district of Gujarat, was declared the best tourism village by UN. So, but economic, social, environmental dimensions हैं. तो इवन यूरोपियन कमेटी है एक ऑफ द रीजन्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की रूरल टूरिज्म की वजह से भी क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा एट द सेम टाइम। तो इंडिया के इनिशिएटिव्स अगर हम देखते हैं, लाइक स्वदेश दर्शन स्कीम इज एन एग्जांपल, 2014 में लॉन्च किया। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो बेसिक जो एमिनिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी अवेलेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट देन टूरिस्ट सर्किट्स हम प्रमोट करें, लाइक स्वदेश दर्शन या रामायण सर्किट है, बुद्धा सर्किट है। अपार्ट फ्रॉम दिस central nodal agencies, rural tourism, rural homestays promote हो रहे हैं, coordinating body amongst the center. So like niche experiences is a keyword. So इंडिया में डाइवर्सिटी जो है वो एक हमारे लिए एडवांटेज इस सेंस में भी हो सकता है, लाइक मटूर विलेज इन कर्नाटका, दे स्पीक ओनली संस्कृत, एंड मछली इन महाराष्ट्र, अग्रेरियन homestay surrounded by coconut, beetle, banana plantation, बिश्नोई विलेज राजस्थान।
So these are some of the destinations where tourists can immerse themselves, immersive tourism. तो spiritual and wellness क्या हो या vibrant village programs हो, तार village लद्दाख, तो यहाँ सब examples दे रखे हैं. So even UP, for instance, is looking to partner with private hospitality players in agri-tourism sector to boost the rural economy. तो रूरल इकोनॉमी के लिए अगेन जो ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर वो हम रूरल टूरिज्म के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं. So water crisis threaten the world's ability to eat. अगेन वाटर क्राइसिस होगा तो फूड प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है. तो एक्सेप्शनल ड्राई सीजन followed by heavy rains in China's agricultural heartland of Henan province drive up everyday vegetable prices. So even right now also India में if we look at the vegetable prices, so they are also towards the upper end. तो फूड इन्फ्लेशन को टैकल करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है. तो वी नीड अगेन an integrative monetary and fiscal policy to deal with it, because we have to deal with both supply side and the demand side measures. So food production is concentrated in too few countries, so वो भी एक अब challenge है. And many of them are facing water shortages. So यहाँ पे precision based agriculture हमें help कर सकता है. World Resources Institute है, and they say that 1/4 of the world's crops is grown in places where the water supply is stressed and it is unreliable. Then Global Commission on Economics of Water, they have said that concluding that half the world's food production is in areas जहाँ पे water availability decline हो रही है. तो सारी स्टडीज कहीं ना कहीं सिमिलर हमें रिजल्ट्स बता रही हैं. तो एल नीनो एक हमारे लिए चैलेंज है. तो क्लाइमेट चेंज वहाँ पे हम ब्रॉडली बात कर सकते हैं अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस या कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक वो एस्पेक्ट हो सकता है. वाटर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन कैन बी अगेन डोमेस्टिकली मोर प्रमोटेड. So precision based agriculture में we can talk about how technology can help us in terms of even knowing कि कौन सा fertilizer best suited होगा. तो accordingly जो irrigation या amount of water चाहिए, या sprinkler irrigation हो गया, per drop more crop हो गया, या even like बात करते हैं waterless या even like soilless cultivation in different labs. So उसको भी हम और promote कर सकते हैं. The Supreme Court need not act as an opposition, CJI so says, cannot look at its role from outcomes perspective. तो again, judiciary की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो it should remain stick to justice delivery, और उसमें भी again due justice की हम बात करते हैं. तो as an opposition again ये थोड़ा इसमें बोल सकते हैं कि it will go narrow, या it can also lead to violation of constitutional morality, या somewhere also violation the doctrine of separation of powers. So opposition related to political parties है, तो opposition को अपना role play करना चाहिए in the parliament. If we imagine also कि judiciary playing such role, so it can have distortionary impacts. सो यहाँ पे हम जुडिशियल एक्टिविज्म की जब बात करते हैं तो कैसे उसको भी लोग इंटरप्रेट करते हैं, या इवन लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव हाउ इट takes that or how it accepts that is one thing, but again that is not an opposition. So I think that is a dangerous proposition, because you cannot look at the role of Supreme Court or its work from the perspective of the outcomes also. So it is one of the key social institutions, and recently we saw कि जो Swerage's Risk Bank Prize है, जिसको हम Nobel Prize in Economics बोलते हैं, that was also given on the basis कि the role and the importance of social institutions in a country is important to promote growth and development. So from that perspective also we can look at it. So that's all for the day. Thank you so much for joining us on Ansarkari. Stay tuned for further detailed discussions in the upcoming sessions.